So hello everyone, welcome to RS Educator. OSSTET exam सरी जाइए 2021 and answer की छाड़िया पाइन टिके लेट हैला due to some other responsibilities. Anyways, आबियो first हमें discuss करिबा botany question. तो ये वीडियो रे हमें only bio portion टा discuss करिबा and other videos रे other portions सब cover करिबा. Okay, so let's start. So first question of botany is binomial nomenclature was first employed by Linnaeus in the book all of us know, that is species plantarum. तो plantarum खाली actually बहुत easy question एथर का science रो पढ़ी ची सब किसी मैं भाबुची बोधे 10th और 11th ए लेवल लो सब question पढ़ी ची तो बहुत ही easy question पढ़ी ची. ओके तो हमें जानी चे plantarum होची हमर कोन species plantarum means the species of plants that are Carolus Linnaeus द्वारा book थिला and that was published in 1753. Okay, तो plantarum देखिए general plantarum मारिवेनी, species plantarum is the right option. Okay, then the initial acceptor of CO2 in C3 plants is, तो जंती हमें जानी चे C3 cycle ले हमारा कौन हुए ना carbon dioxide is reduced to form a first 3 carbon stable compound that is 3PGA जोटा कि हमारा 3PGA होची टारगेट. तो इनिशियल कार्बन ऑक्साइड एक्सेप्टर होची हमारा 5 कार्बन मॉलिक्यूल जोटा कि RUBP और राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट. क्लियर, राइबुलोज 1,5 बाइफॉस्फेट. ऑप्शन नंबर बी इज राइट. देन क्वेश्चन नंबर 63. इन ट्रीज द ग्रोथ रिंग्स प्रेजेंट इन that is cork cambium. Clear? Then meristematic tissues from which lateral roots originate are known as pericycle. Clear? तो 100% आप ये आंसर गुड़ा को ठीक बोली भाविबे बिकॉज एटा बुक्स रू मु फॉलो करी आपण मानन कहूची गूगल लो नुहे बिकॉज हमर गूगल रे भी डिफरेंट साइट रे डिफरेंट डाटा पळे आसुची. तो गोटे क्वेश्चन मु देखिली गूगल आंसर हमर बुक को चाहि कि अलगा अछि तो से पई के कहूची तो एटा आंसर आपण 100% पाइबे. देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन. पोटैटो टोमेटो टोबैको बिलोंग्स टू फैमिली. ओ माय गॉड, क्लास 10 नो क्वेश्चन बोधे है. Then which one of the histone theory from apical meristem can be compared with tunica corpus theory? Okay, तो क्वेश्चन टा को एठी टिके बुझीबा. ए क्वेश्चन टा एक्चुअली से कहूची कोन ना हमर हिस्टोजेन थ्योरी आउ ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी दीटा थ्योरी हमें पढ़ी से कोथरे हमर एनाटॉमी रे. तो हिस्टोजेन थ्योरी रे हमर कोन रूट एपेक्स आउ सूट एपेक्स जाउचंती. सूट एपेक्स एंड रूट एपेक्स बोथ जाउचंती. ओके, बट हमर ट्यूनिका कॉर्पस रे जाउची ओनली. तो से क्वेश्चन कोन कहूची ना हमर हिस्टोजेन थ्योरी रो जो एपिकल मेरिस्टेम रहिला सेटा ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी रो को जिनसटा ट्यूनिका सहित कंपेरेबल. ओके, तो ट्यूनिका टा हमें कोन जानले ना आउटर बोली की. तो आउटर कहले सेटा हमर कोन एपिडर्मिस के बुझाउची. तो हमर जोटा हिस्टोजेन थ्योरी रे हमर जोटा डर्माटोजेन रहिला सेटा भी हमर आगु जाएगी एपिडर्मिस रे कन्वर्ट होउची. दैट्स व्हाई हियर डर्माटोजेन इज द राइट ऑप्शन. क्लियर. देन क्वेश्चन नंबर 67. व्हिच टाइप ऑफ प्लांट्स हैव नो सीजेबल फोटो रेस्पिरेशन? ओके, वेरी इजी क्वेश्चन. दैट इज C4 plants because we all know that C4 has crane's anatomy. So I hope no more discussion is required here. Then coralloid roots are present in cycas. We have already discussed. अगर मु जोटा प्रैक्टिस वीडियो रे छाडू थिले बहुत थरे क्वेश्चन टा छाडी छि जो माने भी वीडियो देखिथिबे भाबुछि तो बहुत इजी से मानन पय रहबो. Then the basic structure of all chlorophylls consist of porphyrin head. Okay, एटा भी हम समस्त जानि छे. Then which is not a type of in situ conservation habitat. Okay, तो in situ
कंजर्वेशन कहले आमर कोटा को बुझाऊँगी इनसिटू कंजर्वेशन ने आमर कोटा कोटा जाऊँ आगे नेशनल पार्क जाऊँगी सैंक्चुरी जाऊँगी देन बायोस्फीयर रिजर्व भी जाऊँगी बट बोटानिकल गार्डन टा आमर सेटा होची एक्सिटू कंजर्वेशन ओके सो हियर राइट ऑप्शन इज बोटानिकल गार्डन क्लियर then question number 71 a small part of plant cutting used in tissue culture is called ए क्वेश्चन टा भी मु डिस्कस करी छी जोटा हमर ग्राफ्टिंग का जो वीडियो टारे मु डिस्कस करी थिली तो जो वीडियो गुड़ा आमे ओस्टेट पाई बनै थिले तो सेथिरे मु आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमर ग्राफ्टिंग आउ ग्राफ्टिंग टा जोठी डिस्कस करी थिली सेथिरे गोटे टिश्यू कल्चर रो मु किछि क्वेश्चन डिस्कशन करथिली सो देयर I had discussed this question so the answer is explant okay so small part of plant cutting used in tissue culture is the explant then synthesis of hydrolyzing enzymes during germination is induced by GA समस्त में जानिचे गिबरलिक एसिड then bottle shaped fertile structure of penicillium bearing conidia is phyllodes okay phyllodes that is where nucleus undergo mitosis okay then question number 74 so which growth regulator is present in the maximum amount of coconut milk तो coconut milk रे हमरो cytokinin growth regulator थाए okay then cytokinin it's also called as zeatin okay also known as zeatin उटे भी मन रखिबे जदि अदर को एग्जाम रे पड़े the zeatin is found in coconut milk okay then which are the essential holes of a flower okay तो जेमते हम जानि छे हमर ईच फ्लावर रे दीटा रहउचंती गोटे होची हमर एसेसरी होल आ गोटे हला हमर एसेंशियल होल ओके तो एंड्रोसियम आ गाइनोसियम हमर होचंती एसेंशियल होल ओके because without androsium and gynosium reproduction is impossible that's why they are the essential holes okay then calyx and corolla these are accessory holes okay accessory holes clear then in which character does a pandemic disease differ from epidemics okay तो pandemic आउ epidemics आमे कहिले आमर को वे रे देखो क्वेश्चन टा बुझिबा इन व्हिच कैरेक्टर को कैरेक्टर रे आमर pandemic टा epidemics थारो अलगा होची ओके सो दैट इज occurs in vast area ओके pandemic टा आमर बहुत जियोग्राफिकल एरिया लेकी हुए तो सेट पाएंगे epidemic जोटा आमर सेटा छोटो एरिया भीतर हुए आउटब्रेक ऑफ डिजीज ओके देन an exception to Mendel's law is linkage clear ए तीनटांग हमरो मेंडल्स लॉ रे अछंती लॉ बाकी तीनटांग हमरो मेंडल को लॉ रे आछंती लॉ ऑफ डोमिनेंस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन देन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असर्टमेंट तीनटांग आछंती हमरो लिंकेज ता ही हो डिफर करची एक्सेप्शन टू मेंडल्स लॉ linkage is the exception of Mendel's law of segregation in which group of gene is inherited together okay तो हमर जेनेटिक्स रो जो वीडियो गुडा मु बनैछि प्लेलिस्ट रे आरएस बायोकॉर्नर रो जेनेटिक्स रो प्लेलिस्ट को जाई के देखिले आपण जेनेटिक्स रो बहुत गुडा वीडियो सेठी पाइबे मेंडल्स को डिफरेंट लॉ को आउ एक्सेप्शन कोन भी रहिछि मेंडल्स को लॉ को सेमान को मु कंटेंट वीडियो भी बनैछि एंड सेथिरे क्वेश्चन आंसर विथ क्वेश्चन आंसर मु वीडियो छाडिछि तो ताको देखिले आपण माने भी भल से क्लियर हे पाइबे सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज लिंकेज तो बेसी एक्सप्लेन करले जेहेतु टाइम बहुत लागि जिवो से पेन बेसी एक्सप्लेन करूनी देन अ हाइब्रिड टॉल पी प्लांट वाज क्रॉस्ड विथ प्योर
tall plant and percentage of phenotypic tall plants were observed in next filial generation. Filial generation means amara F1 F2 जोड़ा कहते से गोटा है filial generation. Okay, then what will be the correct result? Okay, तो क्वेश्चन को आम बुझा क्वेश्चन से कौन कौन ना हाइब्रिड टॉल ट्री. ओके, हाइब्रिड टॉल मीन्स कैपिटल T स्मॉल t when it is crossed with a pure tall plant, that means capital T capital T. Okay, so what will happen here? You will get, just remember the Punnett square. If I will write capital T small t here, then capital T, then here you will get capital T capital T capital T capital T, then capital T small t capital T small t. And if we will consider from angle of phenotypic, then all plants are tall here. Okay, so the result is 100%. Clear? Then next question, which one is unrelated pair? Okay, बढ़िया क्वेश्चन टे. तो कोटा हमरो चारटा जो ऑप्शन देछि अनरिलेटेड पेयर कोटा आम जानिचे ईस्ट रे बॉडिंग रे तार रिप्रोडक्शन करे, देन बैक्टीरिया रो भी फ्यूजन रे रिप्रोडक्शन करे, इलोथ्रिक्स तार फ्रैगमेंटेशन ने रिप्रोडक्शन करे, बट स्पाइरोगायराटा हमरो जूस्पोर रे तार रिप्रोडक्शन करेनी. स्पाइरोगायरा भी हमरो फ्रैगमेंटेशन ने ही करे. ओके, जूस्पोर रे हमरो किए ना फंगाई. ओके, टिस्टा जोड़ा हमर रहिले समान सब जूस्पोर रे करंती. ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज स्पाइरोगायरा जूस्पोर हियर. ओके, देन व्हिच इज नॉट द फीचर ऑफ पॉक्सिनिया टेलुटोस्पोर. ओके, तो पॉक्सिनिया रो टेलुटोस्पोर आमे जोटा जानिचे सेटा थिक वाल्ड बोली जानिचे, स्मूथ भी जानिचे, डार्क ब्राउन एंड ब्लैक भी जानिचे, देन पेयर न्यूक्लिफ्यूज. तो तीनटा ऑप्शन आमे जानुचे. तो क्वेश्चन न ऑप्शन गुड़ा पढ़ू पढ़ू आम जानीदबा जे देख ये थिक वाल्ड इच स्पोर पेयर न्यूक्ली एट देख सिंगल सेल्ड. ओके, सो दिस इज नॉट द फीचर ऑफ पॉक्सिनिया टेलुटोस्पोर बिकॉज पॉक्सिनिया टेलुटोस्पोर इज बाइसेल्ड. ओके, दैट इज बाइसेल्ड. आमर एमती दुईटा रोचे ना ये कले ये गोटे सेल रोचे, ये गोटे सेल रोचे आमर. तो बाइसेल डेटा सिंगल सेल केबे भी नुहे, दैट्स व्हाई दिस वन इज द राइट ऑप्शन. क्लियर? देन कम टू जूलॉजी पोर्शन. जूलॉजी रे भी आहुरी बहुत इजी क्वेश्चन पकई भावुचे एथर पिला माने बोधे 40 आउट ऑफ 40 आनिबे, नहीं तो मैक्सिमम तो 38 39 समस्ते आनिबे साइंस पिला. देन व्हिच सेक्स क्रोमोसोम सेट्स आर प्रेजेंट इन नॉर्मल ह्यूमन मेल. ह्यूमन मेल ले हमें जानिचे XY. Okay, then the reciprocal exchange of chromatids during meiosis is called crossing over. Very easy question. Okay, तो crossing over रे ही हमारा chromatid exchange टा हुए. Okay, तो just recall the procedure. Okay, तो ये एवडा सब हमर रहला chromatid रहला, तो ये आमर एक्सचेंज हुए. ओके, देन प्रोसेस बाय व्हिच डीएनए मेक्स कॉपी ऑफ इटसेल्फ, दैट इज डीएनए रेप्लिकेशन. देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म द बेसिस ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. ओके, तो 5 किंगडम रो आमर जो क्राइटेरिया थिला, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी थिला, देन सेल स्ट्रक्चर को भी सेटा भी हमर गोटे क्राइटेरिया थिला 5 किंगडम क्लासिफिकेशन. देन मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी सेठी डिस्कशन हेतिला, बट मोड ऑफ एक्सक्रीशन वाज नॉट देयर. ओके, सो हियर द आंसर इज मोड ऑफ एक्सक्रीशन. देन परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर इज मोर व्हेन. तो क्रॉसिंग ओवर टा आमर परसेंटेज टा केते बेले मोर हुए ना व्हेन लिंक्ड जीन्स आर लोकेटेड क्लोज टू ईच अदर. ओके, लोकेटेड क्लोज टू ईच अदर. तो लिंक्ड जीन जेते पाखापाखी देखा हेबे आमर सेमानक भितरे जेते पाखापाखी देखा देबे, तो क्रॉसिंग ओवर टा तो क्रॉसिंग ओवर परसेंटेज सेते अधिका हबो. क्लियर? देन व्हिच इज रिन्यूएबल नेचुरल
एनर्जी रिसोर्स ओके तो रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल आम क्लास 8 रु पढ़ी पढ़ी आसुचे बायोमास कोल पेट्रोलियम सीएनजी तो ऑब्वियसली बायोमास ही राइट आंसर देन व्हिच इज द इन सिटू कंजर्वेशन देखो एटा गोटे क्वेश्चन यार बॉटनी रे पकेला आ गोटे जूलॉजी रे पकेला व्हिच इज द इन सिटू कंजर्वेशन मेथड फॉर वाइल्ड लाइफ तो वाइल्ड लाइफ पई आमे यार जस्ट बिफोर बोधे गोटे क्वेश्चन डिस्कशन करले हमर नेशनल पार्क टा जाउची इन सिटू कंजर्वेशन ने ओके तो से कहूची कोन ना व्हिच इज द व्हिच इन सिटू कंजर्वेशन मेथड इज फॉर वाइल्ड लाइफ सो दैट इज नेशनल पार्क क्वेश्चन देखु देखु ही आंसर जानी ही जाउची देन व्हिच वन इज द मोस्ट एक्सेप्टेबल एंड रिसेंट थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन ओके सो दिस इज द इंपोर्टेंट क्वेश्चन ओके ए क्वेश्चन टा कथा हम कहउतिले एक्चुअली जो माने गूगल देखि आंसर बाहर करचंदी टिके देखंदु ए क्वेश्चन टा डायरेक्ट हमरो गूगल ले पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन अछि एंड तार आंसर भी डार्विनिज्म बोली देछि ओके बट जदी आपण बुक्स थ्रू रे जिबे ओके तो जदि डार्विनिज्म मारुचंती तो डार्विनिज्म इज द रॉन्ग ऑप्शन हियर द राइट ऑप्शन इज सिंथेटिक थ्योरी बिकॉज हमर क्वेश्चन कोन कहूची मोस्ट एक्सेप्टेबल एंड रिसेंट थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन तो एमती रे हम जदि देखिबा ऑर्गेनिक इवोल्यूशन ने हमर सबुतक लामार्किज्म डार्विनिज्म आइसोलेशन थ्योरी और सिंथेटिक थ्योरी सबुतक आछंती ओके बट जोटा हमर मोस्ट acceptable and recent से theory कोटा तो सेटा होची हमर synthetic theory because modern synthetic theory involved 5 basic processes तो हमर गोटे हला mutation variation आउटे हला heredity और natural selection और isolation ओके तो mutation variation तो हमें जानि छी then heredity ता हमर related to Lamarck's theory हला कि जोटा हमर होची acquired character को नै then natural selection हमें जानि छी Darwin को नै then isolation ओके तो आइसोलेशन थ्योरी तो ये दे दे ऑलरेडी ओके तो ए तीनटा जाकर परे हमर आसिला सिंथेटिक थ्योरी मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी दैट्स व्हाई मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी इज द रिसेंट थ्योरी ओके एंड मोस्ट एक्सेप्टेबल तो एठी आपनकर फॉर दिस क्वेश्चन राइट ऑप्शन इज सिंथेटिक थ्योरी ओके Then next question, when two populations of a species are present on two extreme ends of a forest, they are in geographical isolation. Okay, correct option is geographical isolation because आपनकर seasonal isolation, ecological isolation आउ टेम्पोरल आइसोलेशन ए जो चारिटा जाक रहिला से होची कोन हमर रिप्रोडक्शन ऊपर ओके रिप्रोडक्शन रिलेटेड तो ज्योग्राफिक आइसोलेशन ने हमर कोन होची ना गोटे बैरियर आसी जाउची ओके से देखो क्वेश्चन टा कोन हमर देची ना टू पॉपुलेशंस ऑफ ए स्पीशीज गोटे स्पीशीज रो टू पॉपुलेशन प्रेजेंट ऑन टू एक्सट्रीम एंड्स ऑफ ए फॉरेस्ट दैट मींस देयर इज अ barrier that may be a mountain may be a river okay but there is a barrier that's why here the right option is geographical isolation am I clear then next iodine deficiency in diet oh my god iodine deficiency in diet may cause goiter class 6 ki 7th ru बोधे एटा पढ़ी पढ़ी आसुथिबे that is goiter then which part of renal tubule is sensitive to the action of ADH okay तो ADH रो हमर फंक्शन होची कोन ना इट रेगुलेट द वॉल्यूम एंड ऑस्मोलारिटी ऑफ यूरिन ओके ADH रो फुल फॉर्म जदी हम जानिबा ताहले एंटी diuretic hormone or it's also called as arginine vasopressin okay ADH is also known as AVP that means arginine vasopressin तो यार काम होची कोन ना हमर इट हेल्प्स रेगुलेट द वाटर बैलेंस इन द बॉडी हम बॉडी रे
गोटे हार्मोन जोटा कि आमर हेल्प्स टू रेगुलेट वाटर बैलेंस इन आवर बॉडी क्लियर सो क्वेश्चन आमर कौन कहूँ व्हिच पार्ट ऑफ रेनाल ट्यूबुल इज सेंसिटिव टू एक्शन ऑफ एडीएच तो एडीएच रो एक्शन पाई रेनाल ट्यूबुल रो को पार्टा sensitive that is distal convoluting tubules and collecting ducts okay DCT पढ़ी थे एटा DCT and CD okay then next question in a normal adult human the difference between the systolic and diastolic pressure is it's also very easy that is 120 mmHg okay systolic आम जानी से systolic टा होची कोन हमर पंपिंग जोटा and diastolic है हमर फील जोटा then normal adult human पाई हमर पंपिंग आ फीलिंग भितरे डिफरेंस होची 120 mmHg am I clear then come to next question during heavy physical exercise muscles produce lactic acids then next question जल्दी डिस्कस करिबा because बहुत टाइम ही जाउची लेंदी ही जाउची वीडियो टा then next question जल्दी रे डिस्कस करिबा because बहुत लेंदी ही जाउची वीडियो टा so मु बेसी डिस्क्राइब करूनी खाली आंसर कहि दोची अपन माने जस्ट ऑप्शन देखनेबे कोन लेक्चर बोली ओके so the carbon compound that enters the Krebs cycle is that is acetyl coenzyme A okay the next question the arteries which supply blood to the muscle of the heart are called coronary artery then which part of mammalian brain does control the voluntary muscular coordination okay तो voluntary muscular जहाँ भी आमर muscular coordination रहिला ताको किए कंट्रोल करूची हम ब्रेन ने cerebellum clear then what type of neurons are responsible for carrying stimuli in brain and spinal cord okay तो ब्रेन आउ स्पाइनल कॉर्ड रे आमर को न्यूरॉन गोड़ा स्टिमुली carry करूचंती okay so those are sensory neurons then urea biosynthesis takes place mainly in the liver okay mainly liver रे हुए and less हमरो kidney रे हुए okay then antrum is the cavity of Graafian follicle reproduction chapter पाइबे then last question the first cleavage furrow that divides zygote completely into two cells is a type of holoblastic cleavage clear